Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, so that I know you are with me live in the session. राकेश जी नमस्ते, आपको भी गुड आफ्टरनून. Sudhakar ji, good afternoon to you as well. Sachin ji, hello, good afternoon. I hope you all are doing well. Audible and visible, says Sachin ji. Okay, perfect. Great. We'll just wait for another 20-30 seconds and then we'll be good to go. Ravindran ji, good afternoon. Harpita ma'am, good afternoon to you as well. Priya ma'am, good afternoon. Shravan ji, good afternoon. Great. Great guys. So let us start off with today's mid-market session. So talking about the update on the global markets first. So कल अगर हम देखें तो डाउ जोन्स 0.45% नीचे क्लोज हुआ. S&P 500 भी ऑलमोस्ट 0.35% नीचे क्लोज हुआ और नैस्डैक भी 0.14% नीचे क्लोज हुआ. सो यूएस मार्केट्स में कल प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली फेडरल रिजर्व का बैठक है आज और कल. तो कल हमें फेडरल रिजर्व का पॉलिसी अनाउंसमेंट का डिसीजन पता चलेगा. ये देखना पड़ेगा कि फेड इंटरेस्ट रेट्स कट करती है या फेड इंटरेस्ट रेट्स स्टेडी रखती है. अगर फेड इंटरेस्ट रेट्स कम करती है तो हो सकता है जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10 ईयर के जो यील्ड्स है वो गिर सकते हैं और इसके कारण शायद थोड़ा फ्लोज एमर्जिंग मार्केट्स में आ सकते हैं. बट इफ फेड डिसाइड्स नॉट टू कट द रेट्स एंड कीप द रेट्स स्टेडी, हम देख रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10 ईयर यील्ड्स ऑलरेडी यील्ड्स हैव स्टार्टेड टू इंच अप हायर. So if that's the case, then I feel there will be more pain for our markets, because obviously a higher yields would lead to investors preferring safe assets rather than risky assets like equities. So that is the one big major announcement that will happen. So that impact we'll come to know on Thursday's session, because Wednesday night is when the announcement is going to be. If you look at Dow futures is up 0.05%. So it's indicating a flat to positive start to the US markets today. यूरोप मार्केट्स भी मिक्स्ड रहा है. अगर आप जर्मनी देखोगे 0.07% ऊपर था, whereas लंदन और फ्रांस में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी. यूरो स्टॉक्स इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 0.2% ही ऊपर था कल के सेशन में. एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स में क्लियरली थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, बारिंग निकाय विच इज अप 0.14%. बट अगर आप बाकी की मार्केट्स देखें, हैंसेंग 1.2% नीचे है, जो कि वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन मार्केट इंडेक्स है. चाइना भी 0.4% नीचे है, कॉस्पी 0.27% नीचे है. और निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें सो वी आर डाउन इन द रेंज ऑफ 0.25%. तो कल के सेल ऑफ के बाद आज भी इनिशियली एक वीक नोट पर ही स्टार्ट किए थे हम, बट लकीली जो 50 डे EMA है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है इंट्राडे में, और वही से एक रिकवरी दिखाई दी है काफी सारे काउंटर्स में. सो ओवरऑल अभी भी वी आर स्टिल बिलो दी 26,000 मार्क. हम अब करीब 25,900 के आसपास है निफ्टी, एंड सेंसेक्स इज नियर अबाउट 85,850 लेवल्स. अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें, सो हमारा मार्केट्स रिलेटिवली, एशियन मार्केट्स की बात करें सो आर मार्केट्स आर रिलेटिवली अंडर परफॉर्मिंग. निकाय 3% ऊपर है, कॉस्पी 2% ऊपर है. बट अगर हम निफ्टी की बात करें वी आर डाउन 0.69%, और हैंसेंग एक ऐसा एशियन मार्केट है जो अराउंड 2.45% नीचे है. यूएस और यूरोप मार्केट्स रिलेटिवली फ्लैट रहा है पिछले 5 दिनों से. अगर हम की मैक्रो इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहले तो यूएस डॉलर इंडेक्स पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं कि वो 50 डे EMA के आसपास होवर कर रहा है.
बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम 100-100.5 के ऊपर नहीं जाते हैं तब तक इतना कुछ हमें प्रेशर नहीं दिखाई देगा. As far as the US dollar index is concerned, dollar is definitely appreciating against the rupee. Almost अब 90 के थोड़े नीचे आ गया, अब 89.94 पर है. बट अगर हम डॉलर को कंपेयर करते हैं विद द बास्केट ऑफ 6 मेजर करेंसीज लाइक यूरो, येन, पाउंड, आपका कैनेडियन डॉलर्स, स्वीडिश क्रोना, इन सब बास्केट ऑफ DXY में ये सारे मेजर करेंसीज है. सो उनके relative to that, dollar is slightly underperforming. So that is a relatively good sign for our markets. But the one worrying sign is just before the Federal Reserve announcement on Wednesday night, the yields have started to inch up higher. So this gives me an indication as to if Fed is going to hold the rates, and Fed might not go for a rate cut. So this, I think this is what is just, I'm just taking a guess. I'm not sure if Fed will go for a rate cut here, because it has also given a downward sloping trend line breakout. Yesterday it gave a breakout and it's gone to 4.17. Ideally, if the market is factoring in a rate cut, the yields should have not broken above the trend line and moved up higher. But the fact that we have got a trend line breakout, so it will be very interesting to see as to what the Fed does tomorrow night. इंडिया विक्स की बात करें तो कल के सेल ऑफ के बाद विक्स ऑलमोस्ट कल 7.8% ऊपर था. सो देयर वाज सम विजिबल साइंस ऑफ पैनिक का, एक नॉट पैनिक बट देयर वाज सम फियर प्रिवेलिंग इन द मार्केट येस्टरडे. आज रिलेटिवली शांत है. कल के बेसिस पे इट्स अप 0.36%. क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट कल 2% का एक सेल ऑफ देखने मिला था. ओवरऑल क्रूड ऑयल प्राइसेस का भाव काफी कम है अब. बट रिलेटिव बेसिस पे अगर हम देखें तो एक सिल्वर लाइनिंग हमें ऐसा है कि क्रूड ऑयल का यूजुअली इनवॉइसिंग डॉलर्स में होता है. एक तरफ जहाँ पे डॉलर ऑलमोस्ट 90 तक पहुंच गया है, दूसरी तरफ एक फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस हम तकरीबन $60 अ बैरल के नीचे है. अगर मान लो क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ता, अगर एट द सेम टाइम डॉलर भी 90 पर होता, तो शायद ये जो सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है, निफ्टी वुडंट हैव बीन एट नियर अबाउट 26,000, वी वुड हैव बीन मच लोअर. So it's a good sign that the dollar is up, but the crude oil prices are kind of supporting our markets, and probably inflation numbers would have also been different, and RBI might not have gone for a rate cut had the things been otherwise. So if we look at the gold here, so again gold has been consolidating since the last 4-5 trading sessions. तो अगर हम देखेंगे अराउंड $4,260 $4,270 एन आउंस के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर से गोल्ड आई थिंक $4,390 $4,400 एन आउंस तक जा सकता है. दूसरी तरफ अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है. So on the downside, around $54 an ounce is where the support is. But if we get a breakout above, let's say $59.5 $60 a barrel, then chances are that we can see a breakout happening in silver as well. Now, why is a higher dollar keeps the FIIs away? Because अगर आप देखोगे डॉलर तकरीबन अब 90 के आसपास है. बट अगर हम FII की पोजिशनिंग देखें, why is क्यों एक हायर डॉलर FIIs के लिए एक नेगेटिव साइन होता है, वील सी विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एज वेल. बट अगर हम कैश मार्केट में देखें तो लगातार पिछले 7 दिनों से वो कैश मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं. तकरीबन 16,110 करोड़ का सेल ऑफ हो चुका है पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में. काफी रीजंस है इसके. अगर मैं टॉप 3 रीजंस बताऊं, एक तो स्ट्रॉन्गर डॉलर अगेंस्ट द रूपी. दूसरा, अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखेंगे वो रिलेटिवली कम आया है. That means the earnings have, despite a relatively good quarter 2 numbers, the earnings have kind of not picked up as much as we'd want to. And thirdly, जो इंडिया यूएस के बीच में जो delayed trade talks है, आज एक सुबह न्यूज आया था कि राइस imports में tariffs लगने वाले हैं. Especially this news coming at a time when the deal between India and US, when the talks are progressing, but at a time where US feels we are dumping our rice imports in US and they are considering a tariff, that probably gives us an indication that there are a lot of issues to be fixed, and we might not be
looking for a constructive India-US trade deal very soon. So we'll have to wait and see how that plays out as well. And अगर हम long short ratio भी देखें, so almost 17% से 12% गिर गया. I think the story continues to remain the same. FIIs are still shorts in index futures, no signs of short covering. बस लगातार वो अपना short positions ही build कर रहा है. Now I'll tell you why a stronger dollar keeps the FIIs away. अब मान लो एक foreign investor है, let's say सुधाकर जी is a US citizen and he wants to invest in our markets. So मान लो आज के तारीख पे डॉलर का रेट चल रहा है 80 और सुधाकर जी के पास $1,000 है, इन्वेस्ट करना है उनको. तो वो क्या करेंगे, इंडियन मार्केट में सबसे पहले इंडिया में निवेश करने के लिए उनको पहले डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करना होगा. तो मान लो उनके पास $1,000 है, सो 1000 into 80, सो जो करंट रेट चल रहा है वो 80,000 है. जस्ट एन एग्जाम्पल. So Sudhakar ji has around $1,000 right now. It's at 80. So 80,000 is $1,000 that is converted into rupees. अब वो 80,000 वो सोच रहे कि इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करे एक साल के लिए. And let's say Sudhakar ji is expecting a return of 15% in Indian markets. चाहे वो लार्ज कैप में करे, स्मॉल कैप में करे, मिड कैप में करे, बॉन्ड्स में करे, जहाँ पे भी उनको करना है, उनका एक्सपेक्टेशन है कि उनको 15% इंडियन मार्केट से निकालना है. तो मान लो यही 80,000 वो इंडियन मार्केट्स में डालते हैं. तो मान लो 80,000 and if we do 1 plus 0.15, सो उनका एक साल के बाद 80,000 बढ़कर हो जाएगा 92,000. करेक्ट. सो रफली अगर हम परसेंटेज टर्म्स देखें, सो अगर हम 92,000 डिवाइड बाय 80,000 करें, सो दैट इज आपका 15% आता है. बट अगर मान लो एक साल में अगर डॉलर 80 है, बट अगर एक साल के बाद डॉलर आपका 90 हो जाता है, जस्ट इन केस, जैसे हम देख रहे हैं कि डॉलर इज अप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द रूपी. ना ऑब्वियसली एक साल के बाद इंडियन टर्म्स में वो 92,000 हो गया है. अब सुधाकर जी क्या करेंगे, फिर से सेल ऑफ करेंगे एंड ही विल ट्राई टू कन्वर्ट इट बैक इनटू डॉलर्स. बट अभी डॉलर 80 नहीं रहा है, बढ़ गया, डॉलर अप्रिशिएट हुआ है रूपी के सामने. सो अगर वो 92,000 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो रफली उनके पास आता है अभी $1,022. उन्होंने इंडियन मार्केट्स में कितना कमाया यहाँ पे, 15%. यस, दैट्स हाउ मच हैज हिज मनी ग्रोन इन रूपी टर्म्स. बट अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें, ही स्टार्टेड विद 1,000, नाउ ही हैज $1,022. So if we see is return in dollar terms, because Sudhakar ji US citizen है, उनके लिए तो dollar terms ही matter करेगा. So if you do 1,000 divided by 1,022 by 1,000, so this will be 1,000. ऐसे करता हूँ इसको, 1,022 by 1,000 minus 1, and if we see in dollar terms he has made just 2%. सो रफली जहाँ पे उन्होंने 15% कमाया, बिकॉज ये डॉलर बढ़ा है, 90 बढ़ गया है, तो उसके कारण उन्होंने सिर्फ ऑलमोस्ट 2% कमाया. अगर वही मान लो ये 75 हो गया, the things would have been different. He would have made 1,226. Now if we do 1,226, then I think his returns would have been much better. तो अगर आप देखो 22%. सो डॉलर वीकनिंग होने से FIIs को काफी पैसा होता है, बट अगर आप डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो इंडियन मार्केट्स में भी दे स्टार्ट लूजिंग value in dollar terms as well, and this is what is exactly playing out in our markets. तो जब तक ये stronger dollar है, तब तक FIIs keep losing money on their investments in Indian markets. So जब तक dollar cool off नहीं होता है, जब तक तब तक FIIs का Indian markets में आना काफी मुश्किल हो जाता है. So I hope this example was clear as to why a higher dollar kind of hurts the FIIs, because they start losing value in their investments here. Now, if we talk about Nifty की बात करें, so Nifty kind of drifted down. सुबह के सेशन में अगर हम देखेंगे, we opened on a weak note. Then around 25,750, 25,730 is where we took support, and from there on we have seen some recovery. And जो initial gap था वो just हाल ही में Nifty ने fill किया intraday basis पर, और वहीं से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है. बट आई फील अगर हम 25,920, 25,930 के ऊपर जाते हैं तो हो सकता है ये फिर से हम टुवर्ड्स 26,000 मार्क की ओर जाए. बट नीचे की तरफ 25,750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा. अगर हम 25,750 के नीचे जाते हैं तो हो सकता है हमें फिर से 25,500, 25,600 देखने मिले ऑन दी डाउन साइड.
बट प्योरली इंट्राडे बेसिस पे, क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी भी है और क्योंकि निफ्टी ने सुबह का गैप फिल कर दिया है, तो अगर 25,920 25,930 के ऊपर हम जाते हैं, तो हो सकता है हमें फिर से शायद ऊपर 25,970 26,000 के और निफ्टी जाते हुए नजर आए। एंड अगर हम डेली चार्ट में देखें तो कल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना था, बट आज एक इंटरेस्टिंग साइंस है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था 7 नवंबर को, एग्जैक्ट सेम 50 डे ईएमए तक आया था, वहां से एक डोजी कैंडल, मतलब लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आई थी और वहां से हम फिर से ऑल टाइम हाईज बनाने की कोशिश किया था निफ्टी ने। और फिर से अब यही हुआ है, फिर से हमें 50 डे ईएमए तक आया और वही से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट नजर आई है। सो हाल ही में जो 25,730 25,750 जो 50 डे ईएमए का जोन है, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए ऑन एन इमीडिएट बेसिस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेंसेक्स, और सेंसेक्स का भी सिमिलर स्टोरी है। इट ओपनड ऑन अ वीक नोट एंड सेंसेक्स में भी इंट्राडे बेसिस में हमने ऑलमोस्ट गैप फिल कर लिया यहाँ पे। सो अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो ये जो सपोर्ट है आपका 84,370 84,400, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर सेंसेक्स ये लेवल के नीचे जाता है तो हो सकता है हमें फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने मिले सेंसेक्स में। बट अगर बाय चांस सेंसेक्स ये लेवल होल्ड करता है जो कि आपका गैप फिल वाला लेवल है, so if Sensex manages to hold above, let's say 84 980 85,000, then chances are that Sensex can move towards 85,300 85 400 levels in the short term. So we are at a very crucial point. So I think 85,000 is a strong resistance. I think once Sensex takes out 85,000 on the upside, then we can move towards 85,300 followed by 85,500 here. एंड अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ, सो अराउंड 84,300 84,400 वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा सेंसेक्स के लिए। Now talking about Bank Nifty, so Bank Nifty also it opened on a weak note. So अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो हम बैंक निफ्टी में इतना लोअर ड्रिफ्ट हमें देखने नहीं मिला जितना निफ्टी और सेंसेक्स में हमें देखने मिला था। So Bank Nifty it opened with a gap down, but it didn't break the day's low. और somewhere around 58,880 58,900 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने, और जल्दी ही गैप फिल करके एंड बैंक निफ्टी हैज स्टार्टेड टू मूव अप हायर। सो बैंक निफ्टी आप देखोगे रिलेटिव बेसिस में काफी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी और सेंसेक्स को, दैट इज अ गुड साइन। सो आई फील ऑन द डाउन साइड फॉर बैंक निफ्टी, ये जो प्रीवियस लो है 59,100 का, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। तो जब तक अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आप बना सकते हो by connecting these lows here. So as long as Bank Nifty respects this trend line, the trend is likely to be positive. But अगर हम फिर से 59,150 maybe 59,200 59,150 के नीचे गिर जाते हैं तो हो सकता है हम फिर से towards 59,100 59,000 देखने को मिले बैंक निफ्टी में। But as long as this trend line is respected, I think we can again move towards 59,300 59,400, if not in on an intraday basis, but probably in a couple of days. So the trend is slightly healthier in Bank Nifty as compared to Nifty and Sensex. Now talking about the broader markets, अगर मैं small cap index की बात करूँ, so if we look at small cap by Nifty's ratio chart, अगर मैं इसको डेली चार्ट पर देखता हूँ, सो देर इज क्लियरली, आप देखते हो ये जो रेशियो लाइन है दैट इज इन अ फॉलिंग मोड। सो क्लियरली यहाँ पे जैसे ही दिस इज स्मॉल कैप बाय निफ्टी, क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि स्मॉल कैप अब अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को एंड काफी सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। भले ही आज लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखा है हमने स्मॉल कैप में, बिकॉज वो काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। अगर आप देखोगे यही एक जोन है 0.65 का, जहाँ पे हमें स्मॉल कैप में थोड़ा बाउट्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस नजर आया है। सो क्या ये बॉटम है स्मॉल कैप का? इट विल बी टू अर्ली टू टेल, so we'll have to kind of wait and watch, and जब तक ट्रेंड रिवर्सल साइंस एमर्ज नहीं होते हैं स्मॉल कैप में, it's better to avoid small cap space for now. So पहले से स्मॉल कैप्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, फिर आपका मिड कैप्स भी अंडर परफॉर्म करने लगे,
and market was driven by some select heavyweight stocks, but कल heavyweight stocks में भी इतना strong selling pressure आया, and that has kind of pinch काफी चुभा था कल markets को काफी लोग के लिए. But nevertheless, and if we even look at mid cap 100 की अगर हम बात करें और उसको भी निफ्टी से कंपेयर करें, सो उसमें भी एक ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे दिस इज अ चैनल, सॉरी एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, उसको भी कल यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला था, बट अगेन मिड कैप हैज शोन सम साइंस ऑफ रिकवरी टुडे, बट टू अर्ली टू से कि मिड कैप पे एक रिवर्सल आने वाला है या नहीं. This has to change. At least we need some 3-4 days of strong buying in mid cap and small cap, जिससे एक ट्रेंड रिवर्सल साइंस का एक उम्मीद लगा सकते हैं. बट जब तक वो ट्रेंड रिवर्सल साइंस नहीं आता, इट्स बेटर टू अवॉइड मिड कैप एंड स्मॉल कैप फॉर नाउ, and your focus has to be only on select heavyweights, because those are only the heavyweights and probably the top large cap names that are kind of relatively doing well in this weak market. Now talking about the heat map again, अगर हम देखेंगे आज प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बोथ आर डाउन. इन्फी भी 0.88% डाउन है. भारती एयरटेल इज फ्लैट एंड रिलायंस इज डाउन 0.6%. तो जो 40% वेटेज है टोटल निफ्टी का, जो ये 5 स्टॉक्स मिला के बनते हैं, वो सारे स्टॉक्स में सेलिंग है. तो क्लियरली आप देख सकते हो कि मोमेंटम जो है या जो बायस जो है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड है आज के दिन में. बट थोड़ा सा रिकवरी आया सुबह, रिलायंस काफी नीचे था. Axis Bank is up 0.29%, Kotak is down, Bajaj Finance नीचे है, Bajaj Finserv ऊपर है, श्रीराम फाइनेंस, ऑल दीज फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस. कल हमने देखा था कि फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू दी अदर सेक्टर्स. सो श्रीराम फाइनेंस इज अप अराउंड 1.24%. आईटी काफी सारे अभी आईटी काउंटर्स में भी आज एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है. इतने दिन के रैली के बाद आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड booking profits in the IT space. So TCS is down 1.2%, Infy is down 0.9%, HCL भी 1.16% नीचे है. TechM is down 1.85%, Wipro is also down 1.39%. मुझे लगता है I think the fact that US is considering tariffs on rice imports, वो थोड़ा सा I think वो harsh लगा है शायद markets के लिए. And despite the dollar being strong, I feel जो इतना दिन एक strong rally हमें देखने मिला था आईटी में, considering the fact that considering जैसे statement आया है आज यूएस से on the rice imports, so लग रहा है कि शायद the trade deal might not be announced anytime soon. So Eternal again it's 1.26% higher, so काफी profit booking के एक selling के बाद हमें Eternal में भी थोड़ा सा आज एक बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है. So Titan was probably the top performing stock for the day. It's up around 2.46%. Relatively the other auto names are quiet today. FMCG में थोड़ा आज I think एक defensive approach है. I think ITC is up 0.35%, Hindustan Unilever is up 0.38%, और Nestle India भी 0.36% ऊपर है. So some support from the FMCG space. No support from the metal space. अगर हम देखेंगे टाटा स्टील, JSW स्टील दोनों नीचे है. Hindalco is the only stock that is up around 0.83%. L&T is up. BL में थोड़ा सा रिकवरी आया है, 0.79% ऊपर है. Even the pharma sector is quiet today. Dr. Reddy is down 0.77%. Indigo again, after a lot of chaos that is going on here, I think Indigo is down 0.65%. Asian Paints after a strong rally, इतना strong movement के बाद I think Asian Paints में काफी strong selling pressure नजर आ रहा है. So Asian Paints is down around 4%. So relatively, the market is looking weak with no support from its strong heavyweight sectors like your IT, oil and gas, and BFSI. Now talking about the key sectors to watch, तो अगर हम पिछले 5 दिन से देखें, so अगर हम ट्रेडिंग सेक्टर्स की बात करें, वो है आपका आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक्स. ये तीनों सेक्टर्स ऐसे हैं जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं बाकी सेक्टर्स के मुकाबले. बट अगर मैं वीक सेक्टर्स की बात करूं तो टूरिज्म ऑलमोस्ट 5.5% नीचे. डिफेंस स्टॉक्स, आई थिंक अवॉइड डिफेंस स्टॉक्स फॉर नाउ. थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने दो डिफेंस स्टॉक्स में, बिकॉज सारे डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है.
So defense is down around 5%. PSU banks में भी आप profit booking नजर आ रही है, which is down around 3%. Realty भी 2% नीचे है. So rate cut होने के बावजूद all these rate sensitive sectors like realty and auto, उनमें इतना तेजी हमें देखने को मिला नहीं है. So avoid defense space for now is what I'd say. Again, financial services is the strongest looking sector of the lot. And you might see some names in the financial services space that are doing well. Now talking about the key stocks to watch out, ये weak market में भी कौन से ऐसे stocks है जो relatively अच्छा कर रहा है. The first stock that I want to talk about is Jamna Auto Industries. So Jamna Auto again post the sharp rally, यहाँ पे 20-day EMA तक retest हुआ था और फिर से previous high के बाद जाने के बाद again it started consolidating. So as long as it is above the 111.5 to 112 mark, the trend is likely to be positive. और अगर हमें 125 के ऊपर एक strong closing मिलता है, then हो सकता है Jamna Auto can continue its up move in the near term. Apart from that, even LTF की अगर हम बात करें, so we had a downward sloping breakout. Then post going up again, it has been hovering around its 20-day EMA now. Despite the market being weak, the stock has managed to hold its 20-day EMA, which is a good sign. So almost 290, 295 is where the support is for the stock. And any move above 311, 315, that can lead to continuation of an up move in L&T Finance as well. One other name from the pharma space, that is Eris Life Science. So अगर हम Eris Life Science की बात करें, so this stock has managed to hold its 200-day EMA. अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 20th अक्टूबर, फिर 13-14 नवंबर के आसपास, और आज एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ एक ब्रेकआउट, हमें नॉट ब्रेकआउट बट वी हैव सीन अ स्ट्रॉन्ग मूव इन द काउंटर टुडे. द स्टॉक इज अप नियरली 6% एंड काफी वॉल्यूम्स के साथ आज बढ़ोतरी देखने मिली है. So it has been holding on to its 200-day EMA. So around ये 1525, 1530 is a strong support for Eris Life Sciences, and I think any sustained move, I think it can move towards 1690. But अगर ये 1700 के ऊपर जाता है तो हो सकता है we can expect some momentum to pick up on the upside in Eris Life Sciences. Apart from that, even AB Capital is one another stock that is looking strong. So post the breakout, it kind of consolidated in that 360 to 345 zone, and again it has. So this 360 was acting as a strong resistance for AB Capital, and again today the stock has given a breakout from this high. So on this downside, the 20-day EMA of 345 is likely to act as a strong support. And if it closes above 360, and if we get any sustained follow through above the current levels, that is likely to be positive for Aditya Birla Capital. Apart from that, even GPPL, so अगर हम GPPL की बात करें, so काफी टाइम से एक साइडवेज जोन में गुजरा है ये स्टॉक. So अगर हम ऑलमोस्ट पिछले एक महीने से देखें तो 172 on the downside, and अगर हम देखें आई थिंक 188, 190 on the upside. So roughly around एक 20 points range में ही घुमा है. एंड डिस्पाइट बीइंग इन अ रेंज, अगर आप देखोगे 2 बार 20-day EMA होल्ड किया है. यहाँ पे 20-day EMA से बाउंस आया था, आज भी 20-day EMA से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आया है. I think if it takes out 190 on the upside, I feel even Gujarat Pipavav Port Limited, that is also one stock that can likely do well once 190 is taken out, with around 178, 179 जो कि उसका 20-day EMA वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा स्टॉक के लिए. Apart from that, Federal Bank, so Federal Bank again, it is trading well above its 20, 50-day EMAs. RSI is kind of near, मतलब थोड़ा overbought territory में है. ADX भी is kind of peaked out here. MACD slope is also almost एक प्लेटो जैसा हो गया है ऊपर की तरफ. It has been consolidating, but बोल नहीं सकते कि यहाँ पे एक रिवर्सल साइंस है. बट अगर हम देखेंगे पिछले 7-8 दिनों से एक ही रेंज में मूव हो रहा है, नीचे अराउंड 254 और ऊपर की तरफ 262.
And again, if we get a breakout above 262, chances are that Federal Bank can continue to show its outperformance and continue to move higher towards 265, 270. Apart from that, Shriram Finance, like I said, financial services space is kind of looking strong. ये भी आज भले 20-day EMA नीचे गया था, and again it has managed to go above its 20-day EMA here. So काफी टाइम से ये जो लेवल है 20-day EMA वो रेस्पेक्ट किया है ये स्टॉक ने. तो अगर हम श्रीराम फाइनेंस देखें, as long as it holds 820 level on the downside, the trend is likely to be positive. And I think any move from the current levels can take the price towards 870, 875 levels in the short term. Apart from that, even Gravita की बात करें, so we had discussed this stock a couple of days back. It had given a downward sloping trend line breakout, और breakout के बाद ही हमें एक retest मिला था, and it has retested the trend line which was acting as a resistance earlier, is now likely to act as a support. But I think any move above 1830, 1850, that is going to be positive for Gravita. And if that happens, I think we can expect a fresh leg of rally happening in Gravita here. But for Gravita, around 1730, 1750 is likely to act as a strong support for the stock. And the last stock that I want to discuss today is Motherson. तो अगर मदरसन की बात करें, सिमिलर स्टोरी अगर आप देखोगे 20-day EMA से एक बाइंग इंटरेस्ट नजर आया है. The overall trend is positive despite it had a minor profit booking in the last week or so. But it has managed to hold above its 20-day EMA. Last time also it came close to its 20-day EMA and it has moved up. And I think any follow-through move can lead to continuation of the up move in this particular counter year. So these are the stocks. That was all about today's mid-market session. I hope it was informative. And now let us start off with our question and answer session here. So if you have any queries, any doubts, do let me know in the chat box and I'll be happy to answer them. Sudhakar ji saying, sir, due to year-end holiday period for FII's participation in our market may be low, trade deal with US may extend. Yeah, I feel the movement is likely to remain choppy. FIIs usually are not so active in the month of December. Probably another 5-10 days. I think post 20th of December, we'll see probably less action happening in our markets. I think any action now that will probably happen in January. So January onwards, we'll have the quarter three results coming in. And of course, the next big event for the markets is the union budget on February 1st. So that is something that, the markets, I think January month, I think there'll be a lot of speculation around what the government is going to announce, about the trade deals and all, etc. So I feel January is going to be an eventful month, for the markets in particular. Canes again, so avoid bottom fishing in both the stocks, I would say. I think Canes has recovered, but I think too early to say if this is a trend reversal. I think purely on technical basis, it needs to hold 3830, 3850. If it does that, because that is where the major support is. The last time the rally that came in, Canes came in around from this zones only, from 3850. It kind of nearly doubled to 7,760. The price is attractive, but again, there is a lot of, there is corporate governance issues that is playing out here. So I think we'll have to wait for some more clarity and for more information to come out from the company. I think avoid bottom fishing for now. Wait for the chaos to settle in, and probably then maybe we can revisit the stock. Indigo, I think it's the same. I think there was a news saying, उनका जो scheduled time है, 5% of their scheduled time might go to other airlines, provided the other airlines have that capacity to fly. So again, I feel, Indigo, they will take some time. I think they'll take around a couple of months for their whole operations to stabilize. See, the fundamentally, I think has changed for Indigo. I think this quarter again, they will have some impact on their revenue and profit numbers. Considering the fact that there's been huge refunds that has taken place. But see, fundamentally nothing is wrong with that company. It's just that they need to fix what has gone wrong,
and I'm pretty sure I think they will probably come up soon. But I think again it's better to bottom fish, wait for some more reversal signs in Indigo, and looks like it might uh, you know hopefully recover. I think once the airline fixes their operational issues. So hopefully, I think by Feb second week, third week is what the management has said that they will probably be how like they've been before. So obviously there'll be a lot of hiring. Even the other airlines will try to hire a lot of pilots now. So interesting times for Indigo. But again, I don't see anything fundamentally wrong. The other airlines, I don't think SpiceJet, though it is up almost 16% in the last 2 days, but it's not a stock that can probably keep continuing its momentum here. So it might go up by 10% and it can fall 10% also in one day. So I highly doubt if the other airlines, the market share is not going to drop significantly for Indigo. Uh, and I think people have been like very harsh. I think a lot of people have suffered, but I think Indigo for 19 years have been known for maintaining its on time schedule with no issues. And just like 2 days of wrong judgment, I think it's a judgmental error more than anything. And I think people have forgotten how good Indigo is. I mean, that's how it is, right? I think people don't remember the good times. I think one bad thing and their whole brand image goes for a toss. I think the same thing would happen with Nestle. We discussed Nestle, Asian Paints, and all yesterday. So I'm pretty sure Indigo will probably bounce back very soon. I think Air India, what happened with Air India, I think post, that deadly crash that happened, I think no significant action was, I think, taken on Air India now. I think Air India planes are still flying. It's not that planes were asked to, uh, uh, ground. And so I'm pretty sure I think Indigo will come out. It's just that it's a challenging period for them. Probably it will take them a couple of quarters, before the numbers show up again. Rakesh ji said top players said to have trapped retail investors having MTF by creating panic kind of situation, particularly in small caps. HAL, BEL, Geofin, Masgao, and Trent were having the highest MTF positions. Yeah. See, obviously, so all these defense, and even if you look at the defense sector in particular, I'm not sure if retail investors have been trapped here. But overall, even if you go by what you see on the charts, defense has been underperforming since quite some time now. So uh, I think defense had its fair share of, I think, post Operation Sindoor for a couple of months, somewhere around May, June. For that 1 month, the defense index rose steadily, and I think people thought, okay, this will continue. And I think since then, from almost June onwards, you can see there is a time-wise correction. It's not that retail investors have got trapped here. If that was the case, then I'm pretty sure the trap would have happened somewhere here. So I think all the defense names had run up a lot. All these counters like Musgao Dock, HAL, BL, all these defense names. I think they were almost all these defense counters, railway counters. If you remember a couple of years back, 2023 rally, all these railway names were doing well. And what has happened to the railways name now? You look at IRCTC, IREDA, RVNL, all these stocks are almost flat now. So there is no fresh triggers for the railway counters. I think similar story is planning out in defense. But obviously, I think defense sector might react once the allocation for defense goes up in the union budget. So I'm pretty sure this budget will have some announcement regarding defense deals as well. So until then, probably there can be some short-term pain in this particular sector, is what I feel. Archana ji is asking for Orient Cement. Orient Cement, like we discussed this yesterday, I think it's better to avoid. It's in a downtrend. I think you can keep your. I think it's better to exit this counter because it's in a downtrend and there are no signs of reversal yet in this particular counter. If you look at Jindal Saw,
Jindal Saw is also in a downtrend. No signs of reversal in this particular counter as well. I think it can continue to fall. So around 150 is a strong support. I think if it goes below 150, it's better to exit. Ashoka Buildcon, if we see this stock is also in a downtrend. I think a strong support is in the zone of 160. If it goes below 160, then it's better to exit this counter. I think Upmo is ruled out as long as 178, 180 is not taken out. It's better to exit this. Better to avoid this counter unless 178, 180 is not taken out on the upside. Praveenji is asking for standard glass lining. ये कौन सा स्टॉक है? ओके, अगेन डाउन ट्रेंड में है प्रवीण जी। ये भी स्टॉक देखो सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे है। आई थिंक ये 135 तक गिर सकता है। आई थिंक अवॉइड जब तक 160 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिलता है, इट्स बेटर टू अवॉइड इट। सी टाटा स्टील, सी मेटल स्पेस में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। इट्स नियर इट्स 200 डे EMA ईयर। आई थिंक अवॉइड टाटा स्टील फॉर नाउ। थोड़ा सा रिवर्सल साइंस आने तो मे बी अबाउ 168, 170 अगेन मे बी यू कैन कंसिडर टाटा स्टील. Same with JSW Steel as well. JSWB, it's kind of gone below its 100-day EMA, but it needs to hold 1070, 1080 on the downside. थोड़ा सा और रिवर्सल साइंस के लिए वेट करना. आई थिंक 1130, 1140 तक. I think if we get that, then chances are that JSW Steel में भी थोड़ा रिकवरी आए. Yeah, Shriram Piston, we discussed this. Shriram Piston is good. वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है. आई थिंक इट कैन कंटिन्यू टू मूव अप हायर. आई थिंक 2930, 2950 is likely to act as a strong support, and there has been a good pickup in the volumes as well in this particular counter, and post the long phase of consolidation the stock has kind of started to move up higher. PGL, अवॉइड PGL बिकॉज ओवरऑल साइडवेज ट्रेंड में है. जब तक हमें 611, 615 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलता है, इट्स बेटर टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर काउंटर. If we look at PFC, PFC भी डाउन ट्रेंड में है. बेटर टू अवॉइड दिस. आई थिंक अगर आपके पास ऑलरेडी है तो एग्जिट करना ही बेटर होगा, बिकॉज ये सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे. RSI भी देखो काफी 40 के नीचे है. ADX rising, and that indicates that the bearish trend is very strong. So avoid PFC, both the stocks. It's avoid your PGL. I have already discussed. Parthasaraji, Shakti Pumps. Again, it's in a downtrend. I think you can keep your SL around 515 Shakti Pumps. I think if it goes below that, then it's better to avoid Shakti Pumps as well. NMDC की बात करें, so NMDC is relatively flat. I think wait for a breakout above 7880. I think once we get a breakout above 7880, then chances are that we can see fresh up move in this counter, while on the downside around 72. That level is likely to act as a strong support. GPPL we discussed. Suvarna ji, GPPL is good. But I think we need a breakout above 190. I think once we see a stock moving above 190, it can move up higher with around 170, 172 acting as a strong support for the stock. Clear? So that's all from today's mid-market session, guys. I hope it was informative. And we have one more webinar today that is happening today at 4 o'clock. So last week we discussed bull call ladder spread. That was a bullish strategy. This week we are going to discuss the opposite. Today we are going to discuss a bear put ladder spread today, guys. So that's happening at 4 o'clock. It will be a 30-45 minute session. I'll also walk you through the strategy builder feature on our app, and we'll discuss the bear put ladder spread strategy in detail. So see you at 4 o'clock, guys, on SBI Securities YouTube channel. Until then, take care, stay safe, and see you soon.